वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का सिलसिला है, कंप्यूटर टाइप्स का हम देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जिनमें हम जो पहले देख चुके हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स हमने देखी हैं, उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे। व्हाट आर माइक्रो कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स ये क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस वक्त क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे कंप्यूटेशन की दुनिया के अंदर, वेरिएबल कंप्यूटर्स क्या हैं, और कंप्यूटर इनसाइड द बायोलॉजिकल बॉडी कैसे काम करते हैं, यानी हमारे जिस्म के अंदर भी कंप्यूटर को इंस्टॉल किया जा सकता है, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है जिसको हमने आज देखना है। लेट फर्स्ट वी लुक एट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो प्रीवियसली हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो है कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं उसको हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं: टाइप ऑफ डेटा प्रोसेस्ड, पर्पस ऑन यूज़ एंड साइज ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, और इसी साइज ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी में हमारे पास फिर ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जिनमें स्पेसिफिकली माइक्रो चिप लगी हुई होती है। ठीक है, और इस माइक्रो कंप्यूटर्स में हमारे पास ये पूरी एक सीरीज़ मौजूद है। वर्क स्टेशंस हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, एंड सो ऑन। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है? इट इज़ अ स्मॉल और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एक छोटा कंप्यूटर होता है कंपैरेटिवली, उसकी प्रोसेसिंग पावर भी कम होती है, माइक्रो प्रोसेसर उसमें लगा हुआ होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम माइक्रो कंप्यूटर्स आर रिप्लेसिंग अदर बिग जाइंट्स, यानी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनकी पावर इतनी बढ़ती जा रही है कि दूसरे जो बड़े कंप्यूटर्स हैं, मिसाल के तौर पर मिनी कंप्यूटर्स हैं या वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स हैं, तो उनको इसने कम्पीट करना शुरू कर दिया हुआ है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स क्या है? A workstation is a special computer designed for technical or scientific application. मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑपरेटर जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रही है बैठी हुई, तो ग्राफिक को वर्कआउट करने के लिए एक स्पेशल किस्म का हाई परफॉर्मेंस सिस्टम चाहिए होता है। सो शी इज़ वर्किंग विद दैट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम विच इज़ बेसिकली अ वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशंस ऑफर हायर परफॉर्मेंस दैन मेन स्ट्रीम पर्सनल कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ CPU एंड ग्राफिक्स, यानी वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स में CPU बड़ा हो सकता है, ग्राफिक्स उसके बहुत अच्छे हो सकते हैं, ग्राफिक कार्ड उसका बड़ा हाई फाई हो सकता है, मेमोरी कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, और मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी डेस्कटॉप या माइक्रो कंप्यूटर। Workstation are optimized for the visualization and manipulation of the different types of complex data such as, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के स्पेशल पर्पसेस के लिए भी हम वर्क स्टेशन को यूज़ करते हैं, जैसे 3D मैकेनिकल डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग सिमुलेशंस है, एनिमेशन एंड रेंडरिंग ऑफ इमेजेस है, मैथमेटिकल प्लॉट्स हैं, और इस किस्म के और बहुत सारी चीज़ें। स्पेसिफिकली जैसे हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, बॉटनी की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस को सिमुलेट करके देखा जा सकता है। However, the distinction line has been blurred with increasing capabilities of the PCs. तो ये वही बात कि PC जो हमारा जनरल है उसकी भी पावर इतनी बढ़ती जा रही है कि वो वर्क स्टेशन को कम्पीट करना शुरू हो गया हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर्स में हमारे पास ये चार बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, चार बड़े हैं कैटेगरीज। डेस्कटॉप सिस्टम्स, हियर यू कैन सी दैट, और मोस्टली आपका ताल्लुक रहा होगा डेस्कटॉप सिस्टम्स के साथ, सो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा। लैपटॉप्स, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। टैबलेट्स, ठीक है, दीज आर द टैबलेट्स, मोस्ट प्रोबेबली यू नो अबाउट दीज आर द स्मॉल कंप्यूटर्स जिसके ऊपर आप जो है टच करके स्क्रीन को और बहुत सारे काम करवा सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपको एक डिवाइस भी दी होती है कि जिससे आप उसको मार्क कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। एंड देन देयर आर द स्मार्टफोन्स, दीज आर द स्मार्टफोन्स, एंड आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू, आप में से हर बंदे को स्मार्टफोन का पता है, तो इसलिए इन कैटेगरीज को हम इतने डिटेल में नहीं देख रहे। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, IoT, एन एम्बेडेड कंप्यूटर जिसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है, इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू अदर डिवाइसेस, यानी दूसरी डिवाइसेस में हमने अगर कंप्यूटर लगा दिया हो, एम्बेडेड उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, तो उसको हम माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू द फंक्शन ऑफ दैट डिवाइस। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोवेव ओवन है, यहाँ पे स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन,
तो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है और इसके अंदर हम इसकी कंप्यूटेशन कर सकते हैं और इसका जो फंक्शन होगा वो बेसिकली वेरी मच अलाइंड होगा विद द फंक्शन ऑफ द स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन। इसी तरह से यहाँ पे आपको स्मार्ट फ्रिज नज़र आ रहा है, तो यहाँ जो डिवाइस लगी हुई है उसका फंक्शन भी, जो प्रोसेसर लगा होगा उसका फंक्शन भी उस डिवाइस से रेलिवेंट ही होगा। एंड सिमिलरली मैनी अदर थिंग्स। IoT जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, ये हमारे पास अब वाइड वैरायटी के तौर पे हमारे पास आ रहा है और आपको फ्यूचर में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता हुआ ये नज़र भी आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें कि ये गाड़ी है और गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, GPS है, लीडर है, वीडियो कैमरा है, इंफ्रारेड कैमराज हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। तो एक गाड़ी में कई चिप्स या कई छोटे छोटे सिस्टम लगे हुए हो सकते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मॉडर्न TV सेट्स, मोटर व्हीकल्स, टेलीफोन, डिजिटल कैमराज, washing machine, microwave ovens, dishwashers, etc. The embedded computer is devoted to performing a specific task. ठीक, इसके uses क्या हैं? It is used in communication, entertainment, science and technology and many more things. तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि IoT क्या है, embedded computers क्या है। ओके, अब हम थोड़ा सा embedded systems को देखते हैं कि वो किस तरह से हमारी लाइफ में काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ द वीडियो जो कि मैंने यूट्यूब से ही ली है। सो आई See the move. Play it. This is Shubha and you're watching My Vision Classes. In the next few minutes, you'll know what is an embedded system, few examples of embedded systems that we use in our day-to-day life, what is a general purpose computer and the differences between general purpose computer and embedded system. Well, in general, embedded means integrated, and here the integration is of a software and a hardware. So I would define embedded system as a combination of both hardware and a software designed to perform a specific function. Embedded systems are efficient, which means they perform their tasks efficiently, keeping the design on consideration. They perform their tasks with no or a very little human intervention, which means you do not require manpower to perform these tasks. And every embedded system is unique, which means it is designed to perform one unique task. For example, a fan, refrigerator, aeroplanes, medical equipments, automobiles, TVs, and the list goes on. Modern embedded systems are based on microcontrollers, microprocessors, SoCs, and FPGAs. These are designed to carry out the specific tasks which I already mentioned earlier. An embedded system works by taking analog or digital inputs. These inputs are further processed based on how the software is configured, and a desired output is obtained. Some embedded systems have a user interface, such as an optical mouse that takes pictures of the surface as the user moves the mouse. These pictures are stored in a memory and compared to determine the location, which are outputted to the general purpose computer so that you can see the movement on the screen. Now, this general purpose computer is not considered as an embedded system because it can be used to perform multiple functions. Moving on to the differences between general purpose computer and an embedded system, I would differentiate them based on certain categories. Well, based on the definition, a general purpose computer executes variety of applications, whereas an embedded system executes only a specific set of applications. Based on the content, a general purpose computer has a general purpose operating system, while an embedded system may or may not have an operating system. Based on the iterations, the applications on a general purpose computer can be changed by the user, whereas the applications on an embedded system are fixed and cannot be changed by the user. The power consumption in case of a general purpose computer is always more than that of an embedded system. Also, the key factor for a general purpose computer is only the performance, whereas in case of an embedded system, it's the power, the memory usage, cost, speed, etc.
So friends, thank you for watching the video, and this was all about Introduction to Embedded Systems. Please do share, like, subscribe. Introduction to Embedded Systems. Please do share. ओके और अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो कैसे हमारे लाइफ में परफॉर्म कर रहा है. Or IoT is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data, and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data, and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data, and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiency. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer. मैं जरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. अभी है कोई बात? चलिए मैं बाद में कर लेता हूँ. Can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Want to become a part of the IoT revolution? Come and master IoT with EduReka. वेयरेबल कंप्यूटर्स अगली कैटेगरी जिसको हम देखते हैं. हमारे पास अब बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे भी आना शुरू हो गए हुए हैं कि जिनको हम वेयर कर सकते हैं, पहन सकते हैं. अ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कैन बी वर्न ऑन द बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड अ वेयरेबल कंप्यूटर. वेयरेबल कंप्यूटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एक किस्म की. यूजुअली दे आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटेशन डिवाइसेस. ठीक, जैसे फिटनेस ट्रैकर्स हैं, हार्ट रेट मॉनिटर्स हैं, थर्मोमीटर्स हैं एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास वेयरेबल कंप्यूटर डिवाइस है कि जिसको आप गले में पहन सकते हैं. यहाँ पे आपके पास वेयरेबल वॉच है, दिस इज़ वेयरेबल स्पेक्टिकल्स, ठीक, गॉगल्स एंड सो ऑन. तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारी वेयरेबल डिवाइसेस, वेयरेबल कंप्यूटर्स नज़र आएंगे जिनमें प्रोसेसर लगा होगा और वो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स ही होंगे जो कि आइदर डिजिटल इनपुट ले रहे होंगे या एनालॉग इनपुट ले रहे होंगे.
तो एनालॉग इनपुट का अब हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट दोबारा से आना शुरू हो गया हुआ है। जब हमने फर्स्ट टाइम एनालॉग कंप्यूटर्स को देखा था पिछले लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पे हमने कहा था कि एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन विद द इन्वेंट ऑफ वेरिएबल कंप्यूटर्स, analog computation with the use of IoT, analog computation has taken a boost again. Now we look at wearable computers. Welcome to the video which is about some of the most amazing and weirdest wearable gadgets. So let's begin the top 7 countdown. At number 7, the Skin Loudspeaker. We begin the video with something that will probably evolve over time, and it's already quite impressive. Dueling as both a microphone and a loudspeaker, this polymer matrix can easily attach to the skin. It is both flexible and conductive due to its silver nanowires, thus allowing electrical signals to be transformed into vibrations, or vice versa. So now you can turn your whole body into a giant loudspeaker, and people around you would be perplexed from the sound origination. Just keep in mind that you're not going to have a 90 decibel thumping system here, as the membranes are around 100 nanometers thick, which is really thin. At number 6, and I promise to keep this interesting, and it's the Ono. This could either be the best fertility device or the ultimate secret weapon which preys upon the next oblivious victim. So basically the Ono takes multiple temperature data readings during sleep cycles, and then it relays this information into an app. And this basically gives you a predictive algorithm on what time of the month is right for the user. Now, supposedly the device is pretty accurate and it can eliminate outside factors. Now, whether that's a good thing or not, I'm not really sure, and I will leave that up to you to decide. At number 5, the Dexcom G6. This is a really impressive device which can test glucose levels 24/7. This sensor can produce real-time data about how your glucose levels are changing, and this allows you to predict the highs and lows of your day. It does come with its own app for Android and Apple devices, but the most notable feature is that it will work on newer generations of Apple Watches. Now, I think we can all agree that this is something which is pretty useful, and it could even eliminate finger-obtrusive sticks. Now, the good news is that this type of technology is advancing very fast, and there are many devices which are coming out which can monitor different vitals, which we will get to in this video. At number 4, the Bose Frames. Is this yet another Google Glass imitation project? Well, this one's a little bit different. Surprisingly, this one is actually built for third-party AR support, along with Siri capability. The most interesting and probably expected feature is that this frame actually has built-in speakers. Along with its Bluetooth capability, it connects to your phone and it can basically music stream. Now, the speakers don't actually fit inside your ears, so the quality is probably going to be a little bit lower than your conventional earbuds or headphones. At number 3, the How Feel. This device can prevent self-derivative head beatings against the wall and fist slamming. The How Feel is exactly what it sounds like, and it can read heart rate, skin conductance, and even temperature. In turn, the app collects the real-time data, and then it recognizes the user's emotional patterns. Now, this kind of sounds like a good video idea for reading negative comments on YouTube. Anyways, the app gives recommendations based on cognitive behavioral therapy, so you might just save some money and a trip to the therapist. At number 2, we look at a pretty impressive wearable sensor. Now, I know I could talk about the latest Apple Watch or Fitbit, and to be honest, I can't afford to buy any of those things, so now we're stuck with this inferior montage video. But I found this device, and it's really intriguing. It's basically a sticker which can measure glucose, chloride, and other biomarkers, and best of all, it doesn't even need a battery. This device contains electrochemicals, which reacts with glucose, and this in turn provides voltage. So what does this all mean, and what does this thing actually do? Well, levels of chloride in lactate and sweat can determine whether the user is actually being dehydrated, or if their cells have actually stopped burning calories. So this is a little bit more advanced than your typical smartwatch. Unfortunately, it's just not commercially available just yet. There is also another device which I want to talk about, and this one can measure blood pressure through ultrasound. Made from the University of California, this device utilizes a thin elastomer sheet with sets of electrodes and piezoelectric transducers, and it can detect blood vessels up to 1.6 inches deep. Ultimately, we're going to end up with smartwatches that can measure blood pressure, hydration, glucose levels, and even calorie burn. And that's a really good thing, and it's just around the corner.
At the grade number 1, we reach the alter ego. Quite simply, this is a device which can read what you are saying. So it understands what you are saying, even if you're not opening your mouth. And basically the feedback to the user is given through audio via bone conduction, so it does not disrupt the user's audio perception. Incorporated with some sort of computer, it could probably access information without any kind of outside speculation. This was built by the MIT labs, so I would imagine that it's going to be pursued for military use. And this could possibly be a mainstream technology in the future. It's probably not going to understand any of my commentary gibberish, but nevertheless, it's always great to find devices like this which are really original. So once again, thanks for watching. Please like the video if you enjoyed it, and make sure to subscribe to my channel. अब यहाँ पे जो आखिरी आपको एप्लीकेशन दिखाई गई है, वेरिएबल कंप्यूटर दिखाया गया, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Computers inside biological body. There are small sized computers that can operate within biological body. यानी इतने छोटे छोटे कंप्यूटर्स अब बनना शुरू हो गए हुए हैं जो कि किसी भी हयातियाती जिस्म के अंदर जो है रह के अपना काम कर सकते हैं. Scientists are trying to build the first truly biological computer made from the organic molecules of life, capable of working within the living cells of organisms ranging from the microbes to man. Right? Transistors using DNA and RNA are built. This is very amazing point. Previously जो हम ट्रांजिस्टर्स बना रहे थे, हमने सिलिकॉन को यूज़ किया था, दूसरे मटेरियल को यूज़ कर रहे थे. यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को DNA और RNA को इस्तेमाल करके बनाया जाता है. अगेन कोई भी चीज़ हम यूज़ करें जो कि दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सके तो हम उससे कंप्यूटर्स को बिल्ड कर सकते हैं. बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू स्टडी एंड reprogram living systems, monitor environments, and improve cellular therapeutics. And here we'll see that something about the
اور اب ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فیوچر کمپیوٹرز کس قسم کے ہوں گے. موسٹ آف دا جو ہمارا کنسنٹریشن ہے وہ ہے نینو کمپیوٹنگ کے اوپر, کہ کمپیوٹر کے سائز کو چھوٹے سے چھوٹا بنایا جائے. بایولوجیکل کمپیوٹنگ کے اوپر کام چل رہا ہے. ریورس انجینئرنگ آف ہیومن برین کے اوپر کام چل رہا ہے کہ ہم کس طرح سے ہیومن برین کو دوبارہ سے ری انجینئر کر سکیں, اس کو سمجھیں کہ کیسے بنا ہوا ہے. الٹرا انٹیلیجنٹ مشینز ڈیولپ کی جا رہی ہیں. ہیومن برین لائک پروسیسنگ کو ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر, کہ جیسے انسانی دماغ کام کرتا ہے ویسے ہمارے پروگرام بھی کام کریں. کوانٹم کمپیوٹنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور ہائی اسپیڈ چپس. تو یہ چند ایک ہمارے ایریاز ہیں جس میں کام چل رہا ہے, اور فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس قسم کے کمپیوٹرز آئیں گے. سو دیٹس آل اباؤٹ فار ٹوڈے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.